FMCG. What is FMCG? FMCG stands for Fast Moving Consumer Goods. ये जो इंडस्ट्री है, ये हिंदुस्तान के इकोनॉमी में fourth largest contributor है. In the year 2020, it contributed 110 billion US dollars, and it is estimated that 220 billion US dollars की market size हो जाएगी by the year 2025. Now, if the size, as in the market size of FMCG is such huge, you can very well imagine the kind of sales field force that is there in India. And the sales is just going to double in nearly 3 years from now. If that being the case, look at the number of people who would be required in the FMCG. The FMCG industry is not just huge, but also a big market for the sales professional. And people who are serious about making career in FMCG, the industry is just looking out for you guys. Now, समझते हैं FMCG को कि वो exactly क्या है. इंडस्ट्री में FMCG को 4 categories में देखा जा सकता है. The first one is the personal care. The next, home care. The next, health care. And at the end is food and beverages. These are the 4 categories. Personal and home care together contribute about 50% of the total FMCG category. Example of personal care, some of the example, bathing soap, toothpaste, the face cream that you apply. Home care may, the floor mopping liquids that you buy. It's like, what do I say? जो लाइजॉल है, हार्पिक है, या घर को खूबसूरत बनाने के लिए, सेफ रखने के लिए जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, the branded products, these are all the part of FMCG. Then moving on to the healthcare. Healthcare constitute about 31% of the total category. The example of such would be the OTC medicines, which is like the normal products which are sold from the medicine outlet. Cough and cold ho gaya, you can buy the medicine. आपको vitamins की requirement है, you can go and buy from the medicine shop. Sanitary pads or the mosquito repellents, and many such product which is sold over the counter in the health category. And at the end is the food and beverages category, which is again a huge size. 19% constitute of the total category. This is food and beverages. Example could be the dairy products, the bakery products, the health drink or the carbonated drinks, the juices. All of these put together, and many more, not just this, is the category of FMCG. If I talk about some of the brands or some of the companies, the biggest is the ITC, which constitutes about, maybe not, let me just tell you the figure, 50,000 crores per annum. That's a huge size of business. 40,000 crores, like 50,000 crores is for ITC per annum. HUL is 40,000 crores per annum. I mean, these are some of the big names. If I talk about some of the brands, like from the ITC, you would know Ashirwad Atta, Feast Biscuit, Bingo, the chips. Then there is, Kitchen of India for the spices. Be Natural is the juices. Minto, a confectionery, if you know about it. Candyman, Febble, Sunbeam Coffee, MasterChef brand, which has got different kind of food products, ready products. Then Sunrise Pure, the soap that you use is the Fiamma, and Savlon shower to shower, Classmate notebook that you use, Papercraft. Very interestingly, if you have seen these match boxes, which is like AIM
or AIM matchbox, or Home Light matchbox, or maybe Mangaldeep aesthetic, these खुशबूदार वाले अगरबत्ती. These are all ITC products. HUL के कुछ brands की अगर मैं बात करूँ तो the एक्टिव व्हील जो काफी पुराना ब्रांड है, अन्नपूर्णा आटा जो आपने सुना होगा एज कंपीटिंग ब्रांड ऑफ ITC, आशीर्वाद, एक्स का डिओड्रेंट, बूस्ट, हॉलिक, ब्रुक बॉन्ड, क्लिनिक प्लस शैम्पूज, क्लोजअप toothpaste that you use, Cornetto ice creams that you use, Dove की साबुन जो आप यूज करते हो, LA18 for the ladies cosmetics, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, हमाम की साबुन, किसान का, नौर का सूप, लैक्मे प्रोडक्ट्स, लाइफ बॉय काइंड ऑफ soap, Liril, Lux, Pierce, Pepsodent, Pond's cream, this again a fairness cream, Sunsilk kind of shampoo, Vaseline, We Wash, Tony and Guys. These are some of the brand names of HUL, and these are very, very popular in India. Likewise, another brand is Procter and Gamble, PNG. इनके कुछ products आते हैं like Pampers, Ariel, there are Bounty, Gillette, these shaving wale, Head and Shoulders. Then there are Spice, Old Spice, that is for the aftershave lotions. Pantene के shampoos, Ambipure जो गाड़ी के अंदर आप लगाते हो, for the aroma, Mr. Clean, the liquid cleaners, Oral-B, Vicks, Old Spice. I mean, all of these products. Literally, if I tell you, folks, morning when you get up till the time you go to the bed to sleep, you must be using more than 100 brands. Trust me, if you start noting down, you would be using more than 100 brands in a day. Right? So FMCG is really unique in the sense of its market size, unique in the sense how it operates, and caters to India's big population. So it's not an easy task, but trust me, the scope of working is enormous, career progression is enormous, and you would just love how this industry works. Let us begin by understanding in detail about FMCG. FMCG is fast moving consumer goods, which is involved in the manufacturing, sales, marketing, development of goods which are consumed quickly by the direct consumer. There are two terms over here. Rather, there are two words which I want to share with you. One is called consumer, one is called customer. Consumer वो है जो directly product को consume करता है. Customer can be somebody who has bought the product eventually for the consumption of somebody else. For example, अगर आप hotel restaurant के अंदर vegetables या non-veg products या दूध कुछ भी अगर आप मंगाते हो, you process that and you then sell to somebody else, which is the people who have walked in the restaurant to dine in or to have lunch, right? So जो consumer है are the people who have walked inside the restaurant, but customer कौन है इस case में? The restaurant people who buy the raw materials, right? So यहाँ पे important है, if you look from the point of view that the consumption pattern is pretty fast, right? जैसे मान लो आप अपने घर पे कैडबरी की चॉकलेट लेकर के आते हो and you just eat, so you are a consumer, alright? ये FMCG को समझने के लिए दो तीन आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, आपके घर के नीचे जो दुकान है, the shop which is downstairs will have product assortment. Assortment का मतलब प्रोडक्ट की वेराइटीज, रेंज वो ऐसी होगी जो बेसिक है, नेसेसिटी में आता है और ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली उसकी कंजम्पशन होती है. ऐसे प्रोडक्ट्स को वो दुकान वाले रखते हैं सो दैट उनका रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, जिससे कि उनको मैक्सिमम बिजनेस मिल सके. तो एक
आपके घर के नीचे जिस तरह के दुकान है उनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप समझ लेना मोस्टली एफएमसीजी प्रोडक्ट होंगे। एक दूसरा, उन प्रोडक्ट पे एक बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट मेंशन होती है मोस्टली, ये एक दूसरा तरीका है समझने के लिए। और तीसरा, प्रोडक्ट की मूवमेंट जो है वो लगभग फास्ट होती है, रिपीटेटिव होती है। सो इफ आई टेल यू from expiry to manufacturing to expiry, it can be as good as 1 day as it can be up to 3 years. 3 साल की भी अगर एक्सपायरी है दैट इज ऑल्सो अकाउंटेड एज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम अभी बताए हैं। नाउ एफएमसीजी को बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखने का एक नजरिया है। सपोजिंग यू एंड आई वी sit at home and we want to buy some product that we want to consume, right? मान लेते हैं कि आपको चॉकलेट खाना है कैडबरी का, या अमूल का बटर चाहिए आपको कुछ घर पे रेसिपी बनाने के लिए, या ब्रिटानिया मैरीगोल्ड बिस्किट चाहिए आपको चाय के साथ डिप करके खाने के लिए। तो ये प्रोडक्ट्स को माइंड में रखते हुए इफ आई टेल यू ए वन, you have a desire to buy these products, you don't have to shell out lakh of rupees. It's just about few pennies to few hundreds or maybe to few thousand rupees, not lakhs of rupees. So it's a very small ticket size. आपकी involvement to buy these products is very minimal, meaning you don't have to think about the specifications. इसमें कोई टेक्नोलॉजी एंगल नहीं है दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए, कितने मुझे इन्वॉल्व होकर के प्रोडक्ट की डिसीजन मेकिंग करनी है। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। थर्ड, इट इज वेरी रेपिटेटिव परचेज। सपोजिंग आपने आज कैडबरी खाया चॉकलेट, देन यू माइट अगेन बाय टुमारो और यू माइट बाय विद इन द सेम वीक। तो आपके खाने की अर्ज भी अभी है, आपकी परचेज जो है वो भी अर्ज के साथ रेपिटेटिव है। और रेपिटेटिव क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन बहुत रैपिड है। Are you getting my point? So I will give you a small abbreviation to remember the buyer's perspective for FMCG in simple words. S, just give me a sec. I would give you the word SLRR. This word is quite similar to that of DSLR camera. So just remember SLRR. What does S stands for? Small ticket size. L for low involvement. R for repetitive purchase. Another R for rapid consumption. All right? Very, very simple to remember. SLRR. Moving on to the next slide, which is the perspective of the sellers. What is the perspective of sellers for FMCG? You can understand this as a definition or the meaning. देखिए, जो बेचने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं, I mean definitely as I told you, FMCG industry में the first thing first happens is manufacturing. It is the factory that produces a product. तो यहाँ पे जो सेलर है is the manufacturer. मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से जो एफएमसीजी की प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी छोटी होती है। इट इज अ वेरी short shelf life, relatively shorter than most of the products. For example, fast moving consumer goods or fast moving consumer durables. Consumer durables का मतलब क्या है? वो जैसे आपके घर का रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सब का शेल्फ लाइफ क्या है? इट इज लाइक 5 years, 7 years, 10 years. बट एफएमसीजी की प्रोडक्ट लाइफ क्या, लाइफ साइकिल क्या है? 1 day to maybe up to 3 years. 3 years किसके लिए कह रहा हूं मैं? Maybe the notebook, maybe the matches, the match boxes, maybe the agarbattis.
these are something which will have a shelf life of over years, maybe 1 साल 2 साल 3 साल. पर जो खाने के पदार्थ हैं वो आज दूध, milk, if you don't consume it today, probably tomorrow it might get spilled, or maybe 2-3 days उससे ज्यादा की shelf life नहीं है, right? So the first one is relatively shorter shelf life. Second is high inventory turnover. What is the meaning of high inventory turnover? Inventory का मतलब stocks, turnover का मतलब rotation. तो जो product है वो एक retail दुकान से rotation of the product is very fast. यानी कि बहुत ज्यादा stock की sale और खरीद होती है because the inventory turnover is high. Third, as it is high turnover inventory का, तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं बट मार्जिन्स थोड़े कम हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन्स नहीं होते हैं इन प्रोडक्ट्स के. एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट डज इट मीन? द मैन्युफैक्चरर विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बट दैट प्रोडक्ट हैज टू रीच द एंड कंज्यूमर. अब एंड कंज्यूमर अगर कन्याकुमारी में है और मैन्युफैक्चरर अगर कश्मीर में है, तो बीच में वी नीड सम पीपल टू टेक दिस प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. और ये जो बीच में चैनल है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत लंबा होता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ FMCG फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव. इसका एक फॉर्मूला मैं आपको शेयर करता हूं, दैट इज sorry if you cannot see, I hope you can see it here. Let me write here. SHH, oops, thing is going wrong. E. What does it mean? Short shelf life, high inventory turnover, high volumes and low margins, extensive distribution. All right. So this is the definition of FMCG from the seller's perspective. Clear? आगे बढ़ते हैं. टॉप FMCG कंपनीज, जैसा कि मैंने आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बताए थे फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. नो, you can see the turnovers. I want you all to broadly remember the approximation में the yearly revenues. That will give you an idea which company is holding what kind of position in the market. जैसे कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका साल का रेवेन्यू इज 40,000 crores and more. ITC 50,000 crores per year and more. Nestle India, मैगी वाले नेस्ले, किटकैट चॉकलेट वाले नेस्ले, इनका 12,000 crore पर एनम की रेवेन्यू है. ब्रिटानिया, लाइक आई सेड, ब्रिटानिया मैरीगोल्ड, इनका 11,000 crore का रेवेन्यू है. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 10,000 crores per annum. Likewise, if you know Patanjali, then there is Colgate. There are many other companies and different brands. आप खुद याद करके देखो morning to evening what are the kind of brands you're consuming and what are the parent companies, right?